हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में ज्योमेट्री का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आपका डिपेंड रहेगा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और किस तरीके से इस गिवन ट्राइंगल का पेरीमीटर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो वी विल सी इन दिस वीडियो। So before that, if you are new in our channel, please don't forget the like and subscribe my channel. Okay, उम्मीद मैं करता हूँ आपने इस टाइप के क्वेश्चंस और भी देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे, बट आई प्रॉमिस आई विल प्रोवाइड यू अ सिंपल वेल डिफाइंड एक्सप्लेनेशन इन दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले, बिलीव करिए आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, सो लेट्स बिगिन दी सेशन। सो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द दिस ट्राइंगल। सो नाउ आई विल यूज हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी आप क्या है, ये 2 है, ये 30 है, राइट। ये क्या है, 2 है, ये 30 है। सो नाउ टेल मी वन थिंग, पेरीमीटर, हाउ कैन वी फाइंड द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, राइट। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। Perimeter is equals to sum of all side. So now we have only one side of this triangle, so now we will solve this question for other two side. Okay, so now how can we find other two sides? So now first I will take sine c here. Sine c is equals to perpendicular upon hypotenuse, and I hope everything is clear now. Sine c is equals to perpendicular upon hypotenuse, and now we will put the value of c is 30 degree and perpendicular is 2, and now we will calculate this for hypotenuse. So sine 30 is equals to 1 by 2, right, and 2 upon h. So now easily we can find the hypotenuse, and hypotenuse is equals to 4 centimeter. So I put the value of 4 is here for hypotenuse, right. And now I will solve for this question for base. So for base we will take cosine, ठीक है। So cos c is equals to बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। सो एंगल वी विल पुट हेयर अगेन 30, cos 30 is equal to बी सी upon AC is 4 centimeter, right. We have calculated already. So now cos 30 is equals to under root 3 by 2 and is equals to BC upon 4. So now we will cross multiply. So now we have 4 under root 3 divided by 2 is equals to BC, and this is equals to 2 under root 3 centimeter, right. This is equals to BC. So now we have all side of this triangle, right, and now we can calculate the perimeter of this triangle. So very simple, right. So now perimeter of this triangle, sum of all sides, so we will write here 2 plus 4 plus 2 under root 3, right, and this is equals to 2 or 4 6 or 6 plus 2 under root 3. If you want to put the value of under root 3, so you can also put here, and 6 plus 2 and under root 3 is equals to 1.7, right. So 6 plus 2 3 is a 6 or 2 7 is a 14 point, and 2 1 is 2 or 1 3, right, and this is equals to 9.46 centimeter. So perimeter of this triangle is equals to 9.46 centimeter. So and I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।